So today we are going to start this chapter on simple linear regression and correlation analysis. This is the foundation course or foundation topic in data analysis when you are focusing on quantitative research methods. Whenever you see that somebody is doing a quantitative research method, especially when they are finding the determinants of something or effects of something or causal relationship between some things, then they are starting from this correlation and regression analysis domain. यानी अगर हम कोई भी काम पढ़ते हैं जहां पे वो दो बिहेवियर को आपस में रिलेट कर रहा है, किसी एक को कह रहा है कि इसकी वजह से दूसरा है, इसको कॉजल रिलेशन बोलते हैं या डायरेक्शनल एनालिसिस बोलते हैं या इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं कि किसकी वजह से क्या हुआ, तो दे आर विद इन द डोमेन ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. Before this chapter we studied descriptive statistics. In those descriptive statistics we focused on that if we have one data, one column in Excel file, how we can describe it into fewer numbers or fewer words. कि बड़े डेटा को छोटे नंबर में कम नंबर्स में कन्वर्ट कर लें ताकि वो डिस्कस किया जा सके, उसकी what it is telling we can understand rather than just see the numbers and we don't know what they are saying. So in this chapter we will be using same tools like mean, median, mode, descriptive standard deviations and other tools that we studied in the previous chapter, but here we will be using those in different way. वही टूल होंगे लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बदलेगा. So we'll start with this. First of all, we'll start with what are the objectives in this chapter. First of all, we'll start what is correlation and how to interpret it. Then is the correlation significant? Significant का मीनिंग होता है कि क्या हम इसको सिफर से ज्यादा या सिफर से कम कंसीडर कर सकते हैं. सिग्निफिकेंट का यहाँ लेमैन लैंग्वेज में इसका मतलब हम लेते हैं कि ऐसा ऐसा मतलब जिस चीज को सिग्निफिकेंस देख रहे हैं कि क्या वो सिफर से फर्क है कि नहीं, क्या वो इतनी बड़ी या इतनी छोटी, नेगेटिव में या तो छोटी है कि हम कहें कि ये हम इसको अज्यूम नहीं कर सकते कि ये ना नहीं है. जिस तरह हम एक कहावत कहते हैं कि ना होने के बराबर है, यानी सिग्निफिकेंट का मतलब है कि वो ना होने के बराबर नहीं है, वो होने के बराबर है, यानी इतनी बड़ी हो चुकी है या इतनी छोटी है कि अब वो ये नहीं कह सकते कि ना होने के बराबर. तो स्टैट्स में ये जो कॉन्सेप्ट है ना होने के बराबर, उसको उसको चेक करना हो तो उसके लिए हम टेस्ट लगाते हैं. तो उसका वो आगे हम टेस्ट के नाम पढ़ेंगे, ठीक है. तो अगर वो टेस्ट का नंबर बड़ा है तो वी से कि वो सिग्निफिकेंट है, अगर छोटा है तो जो कहावत है कि ना होने के बराबर वो सच हो जाती है कि जो हमने चीज मैयर की वो इतनी थोड़ी आई कि अगर ना भी होती फर्क नहीं पड़ना. समझ आ गया. तो जब भी सिग्निफिकेंट लफ्ज आएगा इसका मतलब है जिसके साथ है, जैसे कोरिलेशन के साथ है, तो वो जो चीज मैयर हुई वो अब सिफर नहीं है. बेशक वो 0.01 है लेकिन वो अपने म्यार के मुताबिक इतनी बड़ी है कि फर्क पड़ता है. ठीक है. अब चीनी का एक दाना शायद फर्क नहीं डालेगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक आउटकम, लेकिन उसके मुकाबले में अगर वो जाफरान है, उसका एक दाना फर्क डालेगा, वो उतना ही कीमती है. ठीक है. तो चीनी का 1 ग्राम शायद उसकी कोई वैल्यू नहीं, सोने का 1 ग्राम उसकी उतनी वैल्यू है. ठीक है. तो इसी तरह हर चीज में मैटर करता है. तो यहाँ पे भी वो नंबर छोटा होना ये म्यार नहीं है कि वो 0 के पास है तो वो इन ना होने के बराबर है. उसका अपना जो स्टैंडर्ड है उसे देखा जाएगा कि वो छोटा होके भी जरूरी है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान पे वो सर्जरी हो रही है और वो जिसम में कोई सुई खुबा के अंदर कोई चीज काट रहे हैं, तो वो 0.1 mm भी आगे पीछे हुई तो कोई और अजा कट जाएगा, तो वहां 0.1 mm भी सिग्निफिकेंट है. किडनी स्टोन 0.4 mm है, 0.5 mm है, वो भी सिग्निफिकेंट है. तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट वर्ड के पीछे बैकग्राउंड है कि वी विल लुक एट कि उसके पीछे जब हम स्टडी करेंगे आई विल लेट यू नो कि व्हाई व्हाट्स द बैकग्राउंड. सो व्हेन वी स्टडी सिग्निफिकेंट
it will be used to identify if the thing that is measured in point 2 that we are talking about correlation, is it different from 0 or not? Can we believe that it is not 0? If it is significant, we can believe. So this is some background. When we will have some example, I will give you more details. Then we'll calculate simple linear regression. And there are two things in the simple linear regression, and then what are the assumptions behind regression, why we use it, and in what situation it will be correct and in what situation it will be wrong. ठीक है, कौन कौन सी शरायतें हैं जो पूरी होना जरूरी है ताकि रिग्रेशन एनालिसिस की जो रिजल्ट्स आए हैं हम उस पर यकीन कर सके. ठीक है, लास्ट, इफ द मॉडल इज सिग्निफिकेंट, रिग्रेशन ने जो रिजल्ट दिए, are they cipher, are they very small, or are they 0, or are they not 0? Okay, so first of all we start with correlation. Correlation can be measured using two ways. First is called scatter plot, second is called correlation. Scatter plot is what I will show you in the next graph slides. So scatter plot is or a scatter diagram is a visual way to show how two variables are related with each other. It's a graphical way to show the relationship between two variables, and correlation is a numerical way to show the association between two variables. Okay, so correlation से हमें एक ग्राफ बनेगा जिससे हमें पता चलेगा कि वो दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेट करते हैं कि नहीं, और जो कोरिलेशन है उसमें वो नंबर होगा एक जिससे पता चल रहा होगा कि वो दो वेरिएबल रिलेट करते हैं कि नहीं. One is numerical method, second is graphical method. Okay, so only then there are few differences, we will study that during the slides. Next is scatter plot examples. So if we have two variables x and y, usually we keep y as a dependent variable and y is usually on the vertical axis. ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, वी विल स्टडी दैट लेटर ऑन, बट वी फोकस डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी ऑन द y axis and the independent variable should be on the x axis. And if you look at the scatter plot, I will give you one interpretation that what does it talk about. Let's write it on the screen. So if I have a pen, so what I can do, so if you consider that this scatter plot has how many, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 points. What does it mean by 16 points? So on the scatter plot, the number of dots represent sample size. Okay, so let's write other way around. Let me add number of dots means sample size. Okay, so if there are more dots means more observations. Common observations mean both of the data is available for these many observations. So there are 16 of the dots, it means 16 values of y are available and correspondingly 16 values of x are also available. Okay, if any one of them is missing, it will be not counted as observation. यानी दो 20 observation हो उनमें किसी में y ना हो किसी में x ना हो, तो it will only count the observation where both of them are available. Okay, now I will interpret what does a dot mean. So let me add a line here, and so that after that if there is more graphs there is no need to explain what is meant by this dot. So let's assume I will add two dots. One this dot I will label x-axis and y-axis, and there is another dot x-axis and y-axis. So I have labeled two dots, and when I am talking about one dot has two types of information available. One is the value of x-axis, second is the value of y-axis. Or in other words, each dot is telling us how high it is
the height will be measured in terms of y-axis and how far it is from the corner, and we call it 0. How far it is from 0. तो हर डॉट हमें दो बातें बताएगा, कितना ऊंचा है 0 से और कितना राइटवर्ड है 0 से, कितना बड़ा है 0 से. So the first dot, let's call it, let me add it, let's call it E, and this is B. So the point A is telling us that there was one case where x has this much value and y has this much value. यानी इस डॉट वाले टाइम पे दिस इज वन इंसिडेंट, तो ये टाइम ऐसा था जिसमें ये इवेंट हुआ. दिस इज वन इवेंट व्हेन x हैज दिस मच वैल्यू shown here and y has this much value. So each dot is telling us simple words, joint coincidence of two things, x and y. यानी हर डॉट बता रहा है कि उस लम्हे में, उस इवेंट में एक्स और वाई ने कुछ रिस्पॉन्ड किया, कोई आंसर दिया. इट कैन बी in 2020 what is the profit of Mizan Bank and what is deposit size of Mizan Bank. Two things happened at that time frame. It doesn't mean that it has happened simultaneously, but in that time frame. Okay, so scatter plot has one advantage, that it will plot the two data sets simultaneously and show how they changed with respect to each other. So when we compare point A and B, we found out that if we move from A and B, both x and y increased. Okay, so it means so there is a linear positive relationship, that whenever there is an increase in x, we have noticed that there is an increase in y. So this graph is linear positive. Linear positive relationship. So it's a linear positive relationship because if we compare one smallest dot with one highest dot, we found out that whenever one is increased, there is a coincidence that other has also increased. Make sure that in correlation, we cannot tell that it is because of x. It is just a coincidence. यानी correlation में हम ये नहीं कह सकते कि y जो ज्यादा हुआ x की वजह से ही हुआ, अब ये मालूम नहीं कर सके. This method will not tell you that y is increasing because of x. It will just tell that it's a coincidence that whenever there is a higher x, there is a higher y. It means, in other words, if you see more people with umbrellas and there is a rainfall, it doesn't mean that umbrellas are creating rainfall. It is because that whenever there is more rain and whenever people expect that there is going to be rain, they keep umbrellas with themselves. समझ आई? जिस तरह यूके में है, it rains 9 days out of 10 days, और 10 में से 9 दिन बारिश होती है. अब उनको पता है कि रेगुलर बारिश होनी है, वो जहां भी जाएंगे दे विल टेक अ जंपर विद देम और अम्ब्रेला. अब आप वहां जाएंगे, हर बंदे के पास अम्ब्रेला होगी या जर्सी पहनी होगी. इसका क्या मतलब है कि और बारिश भी हो रही होगी, इसका क्या मतलब है जर्सी पहनने की वजह से बारिश हुई? शायद बारिश की वजह से जर्सी पहनी है, लेकिन अगर हमने ग्राफ उल्टा बनाया तो वो उल्टा बात भी नहीं एग्जिस्ट नहीं करती. सो कोरिलेशन विल ओनली टेल यू दैट there is a positive coincidence. महज इत्तेफाक है कि जब भी x बढ़ा y बढ़ गया. So this is first step in comparing data sets, two data sets, that if there is a coincidence, there can be a relationship. अगर वो इत्तेफाक था तो क्या पता वजह भी हो, अगर इत्तेफाक नहीं है तो वजह भी नहीं है, अगर वो चीज बढ़ी ही नहीं तो उसकी वजह से भी नहीं हो सकती. समझ आ गई बात? ठीक है. तो next we'll compare the below graph. So if I compare two dots, one this one and this one, and compare it with some of the lowest one, let's say take this one and this one, and now you can compare that when we move from let's say E, D and F,
When we move from D to F, we notice that X is increasing, but Y is decreasing. So in this case, there is a coincidence that for an increase in X, there is a decrease in Y. So this is a negative linear relationship. यानी इस ग्राफ में पता चल रहा है जो इत्तेफाक है वो नेगेटिव है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है. So these are linear, but in real life graph can be bendy like curvy linear relationships. So in that case, I will give you one example and then we'll move forward. So in the curvy linear relationship, we should focus on how many times graph has changed the angle. First of all, it is increasing, then it is decreasing. So it means that when it is like this, the point where angle is changing is very important. The point where the angle is changing is very important, because beyond that point, if you increase X more than that point, the relationship changes. Okay, so in that, so this is a complicated model and we will study that in the next chapter in detail, but I'm just telling you how to read this graph. If the angle is changing, then it means the decision criteria will also change in between. समझ आ गई? So अगर ऐसा ग्राफ होगा तो जो x वेरिएबल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि किसी खास नंबर के बाद पहले वो पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हुआ. Similarly यहाँ पे भी, if you look at the last graph, it was positive here and then angle has changed. So this point has some role to play. ठीक है? So we will study that when we use in the next chapter when we have similar models. Okay, so let's move to the next slide. Let's clear it. Clear. Okay, eraser. Next is that what does scatter plot, second thing that scatter plot tells. First was the positive or negative. Third thing, the correlation will tell us strong or weak. If the dots that are presented in a positive angle are very near to each other, means the boundary that I drawn are very near, it means it's a strong positive. And second is weak positive, they are very broad. यानी पहले केस में पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है और वो बहुत स्ट्रिक्टली करीब है, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है. और दूसरा है वीक पॉजिटिव, बिकॉज वो बिखरा ज्यादा हुआ है. What is the reason behind it? Why we call that strong or why we call weak? So the reason is, if I can draw it on the graph. So if we look at here, how many ways we can explain the positive relationship? It can be like this, it can be like this, it can be like this. So there are very few ways to draw the line that is crossing through the dots, and all of the lines are very near to each other. All of them are positive. So no matter who is measuring it, all of them will give similar outcome, क्योंकि वो करीब है. जो मर्जी वैल्यूएट करेगा, जो मर्जी तरीका यूज करेगा, सबका आंसर पॉजिटिव आएगा. कुछ का थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा छोटा होगा, लेकिन करीब होंगे. बट इफ इट इज very scattered, so there can be many ways to explain it. It can be positive, very strong positive, negative, it can be like this, negative, weak positive. So the way I am explaining the positive angle, I am trying to create a line showing the angle of the dots, because there are more than one ways and these lines are not resembling each other. It's not a strong positive relationship, it's a weak positive. इसका मतलब ये है कि अगर डेटा बिखरा होगा तो बहुत सारे तरीकों से फर्क आंसर निकाला जा सकेगा. ठीक है,
और जब फर्क आंसर आएगा तो वहां पे कंसेंसस नहीं होगा, उसमें डिसीजन में एक जैसा डिसीजन नहीं आएगा तो आउटकम भी फर्क आएंगे। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है तो सबको पता है हाँ पॉजिटिव है, लेकिन कितना पॉजिटिव है ये नहीं पता। ठीक है, तो इस तरह स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव के बारे में और इसी तरह स्ट्रॉन्ग नेगेटिव और वीक नेगेटिव का ग्राफ बना हुआ। Next is that if the graph is showing horizontal line or circle, if you look at this one, it looks like a circle. So let's select it. If you look at this line, it looks more like a circle, and this one more like horizontal line. It means that there is no coincidence between two variables. There was no change in y because of change in x. Okay, so scatter plot also tells you this thing. If you are comparing non-performing loans with board of director meetings, and you create a plot, the number of meetings in a year and the amount of the volume of non-performing loans, and if there is no relation, you will notice that the graph is either a circle or horizontal line. Horizontal line means that if you compare first dot with the last dot, you will notice that there is an increase in x, but there is no change in y. So increase in meetings does not change the fact that there is a change in non-performing loans. In other words, if it's a circle, then it's I will see how to explain it. That if you compare the first dot with the last dot, there is no major change between the y and there is a huge change in x. Okay, so it's a circle. जिसको उर्दू में कहते हैं घूम के उधर ही आ गए, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, nothing changed. So if the graph is circle, it means, or a horizontal line, it means there is no coincidence, no evidence available that they are related to each other. Okay, now I will go towards the next slide. Next is correlation coefficient, how to measure it. So if the data is population, the notation is rho, and if the data is sample, the notation is r. The difference between population and sample we already discussed, that अगर जिसके बारे में डिस्कशन हो रही है और सारे कवर हो गए, that is population. If we are discussing something but उसमें से कुछ लोगों को स्टडी किया, it's a sample. Okay, so what are the properties of correlation? There are no units. जो भी चीज मेजर कर रहे हैं उसके यूनिट्स नहीं है, यानी एक नंबर है सिर्फ. The correlation is between -1 and 1. -1 means strong negative linear relationship. 1 means strong positive linear relationship. 0 means no or weak linear relationship. 1 आ जाएगा तो इसका मतलब है जो x और y थे वो आपस में बहुत स्ट्रांगली रिलेट करते हैं, और अगर वो 0 आ जाए तो नहीं करते, -1 आ जाए तो नेगेटिवली करते हैं. इसको उसने ग्राफ में बना के दिखाया. You look at the graphs and see. So if the dots are arranged in a way that the line which is crossing the dots are crossing all the dots, then it is either 1 or -1. So the line is the average value of correlation. Line is average value of correlation, and the spread of dots is standard deviation of correlation. So if the dots are on the line, there is no standard deviation. If the dots are away from the line, there is high standard deviation and low mean value. Or in other words, so correlation tells us I have not given the definition of correlation. So from this you can understand the definition of correlation. Correlation will tell you how near the dots are
to that hypothetical black line. कि हमने डेटा में से एक लाइन गुजारी है और हमने लाइन इस तरह गुजारी है कि सब डॉट्स के दरमियान से गुजरे. The property of this line is that it is crossing through the center of the dots. If the dots are nearer to the line, the correlation value will be high in terms of number. If they are away from the line, the correlation value will be small. So in the first case, the correlation value is -1. Here 1 means dots are on the line, they are not away from the line. Minus means it is negative. So minus has different meaning and 1 has different meaning. In the second graph, it is minus 0.6. 0.6 is representing that dots are not very far from the line but not on the line. And minus means it is negative, going down. Third case, it is horizontal, means 0. Fourth case, positive 0.3. Line is in the middle of the dots. Dots are away from the line, so it is 0.3. But the line is positively sloped, it is +1. The last case is the dots are on the line. So correlation हमें क्या बताता है कि जो दो वेरिएबल आपस में कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिवली रिलेट करते हैं या नेगेटिवली करते हैं, तो क्या उनमें कॉमन है, मतलब वो रिलेशन में स्ट्रांगनेस है कि नहीं. अगर स्ट्रांग होगा तो उसके अंदर से अगर हम कोई लाइन गुजारे तो सारे उसके करीब करीब होंगे. अब इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ. लेट्स से वी आर कंपेयरिंग के जो मैनेजर है उसकी रिन्यूमरेशन और बैंक का प्रॉफिट, हम उसको आपस में कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. सो इफ वी आर कंपेयरिंग द मैनेजर्स सैलरी विद द प्रॉफिट ऑफ द बैंक एंड वी कलेक्टेड डेटा ऑफ ऑल द बैंक्स फॉर ऑल द ईयर्स. हमने 300 ऑब्जर्वेशन का डेटा कलेक्ट कर लिया. पाकिस्तान के 21-22 बैंकों का डेटा लिया, हर बैंक का 10-10 सालों का डेटा निकाला, तो 300 ऑब्जर्वेशन निकल आई. ऑब्जर्वेशन में डेटा में क्या क्या था हमारे पास, प्रॉफिट और सैलरी ऑफ द मैनेजर, दोनों डेटा मिल गए. लेट्स अज्यूम उनमें कुछ वैल्यूज मिसिंग थी, कुछ डेटा नहीं मिला, तो इवेंचुअली हमारे पास डेटा बना 150 केसेस जिसमें दोनों डेटा अवेलेबल थे. हमने स्कैटर प्लॉट बनाया, 150 डॉट बन गए. पहले हम थ्योरी में देखेंगे कि क्या सीईओ की सैलरी, मैनेजर की सैलरी बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है कि नहीं. अगर लिटरेचर कहता है कि हाँ जी बढ़ता है, तो इसका मतलब इसमें से पॉजिटिव लाइन गुजरनी चाहिए. फिर पहले हम डॉट्स देखेंगे कि क्या डॉट्स का एंगल इस तरह बन रहा है, क्या उनका एंगल, आर द डॉट्स लुकिंग लाइक, लेट मी मेक इट बिगर, ये नजर आएगा फिर. यस. So are the dots making a negative angle? Are they going downwards, slightly downwards, or it is in a way that it is going upward? How I judge it? I compare the first dot with the last dot in terms of x. If the last dot is higher, it is going up. If the first dot as compared to the last dot, if the last dot is lower, it is going down. So यहां से हमें पता चल गया कि मैनेजर्स की सैलरी और प्रॉफिट में या तो पॉजिटिव लीनियर रिलेशन है या नेगेटिव है. इस एंगल से पहली बात हमें पता चल गई. थ्योरी कहती है पॉजिटिव होना चाहिए. मैनेजर को जितनी तनख्वाह दोगे उतनी मेहनत करेगा, उतनी प्रॉफिट ज्यादा लाके देगा, उतना ही मोटिवेटेड होगा. ठीक है. तो पॉजिटिव रिलेशन लेट्स अज्यूम आ गया. नेक्स्ट वी वांट टू सी कि हिस्टोरिकली जब भी सैलरी बढ़ाई गई मैनेजर की, क्या हर दफा प्रॉफिट बढ़ा. कैसे पता चलेगा? फर्स्ट मेथड इज कि हम स्कैटर प्लॉट बनाएंगे. हम देखेंगे कि 150 दफा सैलरी बढ़ाने की एग्जांपल हम ले आए हैं. 150 सैलरीज का डेटा आ गया, तो जब उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेंज करेंगे तो 150 दफा सैलरी इंक्रीज होती नजर आएगी. उसके साथ दूसरा डेटा भी उसी तरह रेंज हुआ होगा कि जब हमने सैलरी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेंज किया तो उनके नंबर साथ साथ ही आए, वो उसका ऑर्डर चेंज नहीं किया. तो हमने अब देखना है कि क्या सैलरी बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ता है. ग्राफ का पॉजिटिव एंगल आ गया, हाँ जी बढ़ता है. अब हमने देखना है कि क्या हर दफा बढ़ता है. तो अगर तो वो ग्राफ हुआ इस तरह का, उसका क्या मतलब होगा कि
150 केस में 150 एग्जाम्पल्स में जब भी सैलरी बढ़ी प्रॉफिट बढ़ गया पक्का पक्का, यानी वो डॉट भी ऊपर चला गया, यानी इन सिंपल वर्ड्स every time the dot has moved rightward it has also gone upward. Whenever there is an increase in salary of the manager there was an increase in profit of the bank. Currently we don't know if it is because of the salary, but we have pointed out one very good coincidence, especially good for the manager. वो कहेगा भी मेरी सैलरी बढ़ाओ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम से कम वो तो ये बात कहेगा, सही है. सो understood the meaning, I think. So first thing we found out that if it's a positive and if it is on the line, that it means every time the salary has increased, there's an increase in profit. So board of director will see that the manager is very good. Whenever we gave him higher salary, he has converted the salary into profits. So we should keep him and we should make sure that he is always getting more salary. Okay, but if the graph is like this, okay, there are 150 dots, let's assume, then it's not always, if the dots are not on the line, so it's not always true that every time increase in salary will increase profit. For example, this is a baseline case. Now I will compare it with, first of all, this dot, that there was an increase in salary, make it narrow so that I can add more lines. So whenever there is an increase in salary, if you compare it with this baseline, there's an increase in salary, there was an increase in profit. But because the dots are scattered, there are two more cases that are available. If we compare with this dot, there was an increase in salary, but there was a fall in profit. And if you compare with this dot, there was an increase in salary, but there was a very high increase in profit. So what does it show? That if the dots are on the line, there will be certainty that that thing is happening, and the measurement is there, how much it is happening. हमें यकीन होगा कि इतना हो जाएगा और उतना ही होगा, उसमें रिस्क नहीं होगा उस चेंज में. That whenever there is an increase in remuneration, there is an increase in profit. But in that graph, there is uncertainty because the dots are scattered. It can be case A. Let's change the color. Let's change it to, यहाँ से color change करते हैं. Let's change it to green. This one. So case 1, where there was an increase in salary and increase in profit. It is similar to this case. But in similar data, there was a case that there was an increase in salary, but there was a decrease in profit. And there's a third case that there is an increase in salary and there's a very high increase in profit. So all three cases are available. Normal, that increase in salary, increase in profit, extraordinary profit, and loss. So if there is a very high scatteredness, then we cannot decide that we should increase the salary. यानी लेफ्ट वाले केस में हमारे पास उतने कॉन्फिडेंस नहीं होगा एज अ डिसीजन मेकर कि सैलरी बढ़ाना लेनी चाहिए क्योंकि उससे प्रॉफिट बढ़ता है. राइट वाले केस में उतनी सर्टेनिटी होगी, ये कर लो प्रॉफिट पक्का है. समझ आ गया? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाई वैल्यू ऑफ कोरिलेशन एंड लो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन. समझ आया यहाँ पे? So we have done a thesis in the example that Sharia governance increases profits, and we did literature review on it that Sharia governance increases controls of the bank. It improves the oversight on the data, so there is no forced charity that bank has to pay. So there is more chances that there will be higher profit. But
You did a scatter plot, you found out that there is a weak correlation. And you did the analysis and you found out that Sharia governance has negative effect on profit. What does that mean? वो आपने तो लिटरेचर रिव्यू किया, वहां पे तो वो पॉजिटिव होना चाहिए था, वो नेगेटिव आ गया. नेगेटिव होने की वजह एग्जिस्ट करती होंगी, लेकिन आपके एनालिसिस में व्हाट यू कॉल इट कि हमें श्योरिटी नहीं है कि कब ये रिजल्ट पहले नहीं पता चलेगा कि ऐसे ही आना. ठीक है, सो वो नेगेटिव आने की वजह होंगी, बट इन दिस एग्जांपल वो एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी कि आपने 20 आर्टिकल पढ़े, वो तो कहते पॉजिटिव हैं, आपके नेगेटिव आ गया. तो इसका मतलब आपको 20 और ऐसे 10-12 ऐसे भी ढूंढने पड़ेंगे जिसमें नेगेटिव हो. क्या पता आपको 10-12 ना मिले, एक ही मिले, जरूरी नहीं है उतने मिले. शरिया गवर्नेंस का नेगेटिव इफेक्ट उस टाइम ही होता है जब जिस ओवर रेगुलेशन हो, या पहले ही सिस्टम्स अच्छे हो और शरिया गवर्नेंस सिर्फ एक कॉस्ट ऑफ बिजनेस इंक्रीज कर रही है. ठीक है, एक बिजनेस की प्रैक्टिस पहले ही शरिया कंप्लाइंट है, तो आप अगर शरिया गवर्नेंस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस ही बढ़ेगी, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो मैंने एक एग्जांपल दी. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड विल शो यू सम एग्जांपल्स ऑन इट. टेक टाइम टू डू अनडू. Eraser. Okay, in the next slide, it is showing us a formula how to calculate correlation. Since it will be done with software, I will just tell you the meaning of what it is doing. You don't have to remember the formula. याद करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर ने करना है, बट इसका मतलब पता होना चाहिए. We will focus on the first one because it looks easier. I will tell you how to read it. अगर किसी भी किस्म का फॉर्मूला लिखा हो तो आपको वो एक्सप्लेन करना है कि वो डेटा है क्या. So in this formula there are several components. I will label it one by one. First component is x minus x bar. What we are doing? We have a data of x variable and y variable. We are calculating x bar, which is the mean of x, and subtracting with every x value. So एक नया डेटा बन जाएगा x minus x bar, जिसको हम बोलते हैं deviations of x. ठीक है, deviation d e deviations in x variable. ठीक है, similarly there is a deviation in y. दो नए कॉलम बनेंगे x minus x bar और y minus y bar एक्सेल में, and then we multiply with each other. So it's a product of deviations, multiply हो रहे हैं, product. And then summation sign. Summation का मतलब होता है जमा कर दो सबको, जमा. So it's a sum product deviations. मल्टीप्लाई करना ना, मल्टीप्लाई करके एक नई चीज बनेगी. अगर वो 150 ऑब्जर्वेशन है, समीशन का मतलब सबको जमा कर दो, टोटल सम ले लो. नहीं आएगी ना. There are two columns. We are multiplying each other. There will be a third column. X is the data. X bar is a constant. So x minus x bar will be a new data, and y minus y bar will be a new data. When we multiply column with column, there will be a new column, and it's a data. And when we do sum, it means add word downward. So all the numbers will be added, and it will become total sum. So it's a sum of product of deviations. And if you go down, it's a square root sign, and then deviation and square. So it's a deviation square, sum deviation square, sum deviation square, and product. So correlation is you calculated using this formula. So you don't have to remember the formula. I have just given you names how to read it. It is sum product deviations divided by square root of product of
सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशंस। प्रोडक्ट पहले, क्योंकि वो ब्रैकेट लगी हुई है, प्रोडक्ट पहले हुआ, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो सम है दोनों में, एंड देन फिर डेविएशन के साथ स्क्वायर है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, बट अगर कोई नए किस्म का फॉर्मूला आता है आपको पढ़ना आना चाहिए। जिस तरतीब से मैंने पढ़ा है इस तरतीब से कैलकुलेट हुआ होगा, कि मैंने उसको छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया कि अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े आपको बताओ कैसे हुआ होगा। ठीक है, इसने अगली स्लाइड में करके भी दिखाया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड एंड सी हाउ इट इज कैलकुलेटेड। So we have data of y and x, and data is tree height and trunk diameter. Height of a tree and width of a thickness of a tree. ठीक है, so what does it do? So they have calculated data of how many trees, 1 2 3 4 5 6 8 trees, and they calculated data of height and width of a tree. So 8 ऑब्जर्वेशन मिली हाइट और विड्थ की। अब कोरिलेशन मेजर करने लगे। सबसे पहले तो हमें उसका मीन चाहिए। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या था हमने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y डिवाइडेड बाय 8। सो मीन विल बी इक्वल टू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय 8। सो 321 डिवाइडेड बाय 8, 321 divided by 8 will be the mean value of y. Similarly, 73 divided by 8 will be the mean value of x, and it is shown in the next slide. Okay, then this table has used the second formula, this formula to calculate. Okay, so इसने एक्स वाई कैलकुलेट कर लिया, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर किया, एंड वी हैव दिस फार्मूलाज, एंड इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड उसने वैल्यूज फिल की एंड इट इज गिव अस दिस कोरिलेशन। ठीक है, तो वन एग्जांपल इज हियर हाउ दे कैलकुलेटेड ईच नंबर। यू कैन गो बैक एंड सी हाउ, ये आप फॉर एग्जांपल इसने लिखा समीशन एक्स, कैसे किया होगा, इसने नंबर दिया हुआ 73। पिछली स्लाइड में देखें समीशन एक्स क्या था, एक्स के डेटा को जमा किया 73 बनता है। दूसरा पार्ट देख लेते हैं, उसने कहा है समीशन x इंटू वाई, ये कैसे बना होगा, उसने क्या किया, x और y को आपस में मल्टीप्लाई किया, नया डेटा बना, उसका सम कर लिया। तो इस तरह सारी चीजें कवर हुई, तो हमें फॉर्मूला मिल गया और उसका आंसर आया है 0.886। ये हमें बता रहा है कि द ट्री हाइट एंड ट्री डायमीटर इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया, एंड it is also strongly correlated because it is very near to 1. 1 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता, और 0.5 से बड़ा होने को strong बोलते हैं और 0.5 से छोटे होने को weak बोलते हैं। So it is strong positive correlation. And this is the scatter plot. And scatter plot में कैसे अंदाजा हुआ कि it's a strong correlation, that if we make a line which is passing through, how to change it, rotate, okay, draw, we don't need a ruler. So if we draw a line through it, लाइन इस तरह बनानी है कि उसके दरमियान से गुजरे। लेट्स अज्यूम लाइन है ये, सबके रिप्रेजेंटेटिव है, कोई रॉड इतना दूर नहीं है कि दूसरी तरफ वाला कम दूर लगे। सो आई हैव ड्रॉन अ लाइन विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिलेशनशिप। जिस तरह हमने मीन निकालते हैं, ये लाइन इस रिलेशनशिप का सेंटर है, रिप्रेजेंटेटिव है। इस लाइन का एक नंबर है, वो कैसे कैलकुलेट किया हमने, 0.866। अब 0.866 क्योंकि 1 के पास है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डॉट्स हैं वो कॉमनली मीन के करीब करीब पाए जाते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव लाइन के पास पास पाए जाते हैं। तो इसका मतलब उतना ही हम कॉन्फिडेंट होंगे कि जिस भी दरख्त का डायमीटर ज्यादा होता है उसकी हाइट भी ज्यादा होती है, क्योंकि कोरिलेशन बड़ी आ गई। अगर एक कोरिलेशन छोटी होती तो हम कहते हैं जरूरी नहीं है कि दरख्त मोटा हो तो लंबा भी होगा। समझ आ गया? सो कोरिलेशन हमें दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में दो बातें बता पाता है, एक ये पॉजिटिव है कि नहीं,
पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दूसरा कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वो बात हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि डॉट्स दूर है या कम है, या नंबर से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला टूल है जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हों डेटा एनालिसिस में, क्योंकि हमने पहले स्टेप में देखना होता है कि जो आपने डेटा लिया उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना कॉमनैलिटी है। कॉमन होगा इसका मतलब है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल से रेलेवेंट है। अगर कॉमन नहीं है, आपने कोई ऐसा वेरिएबल ले लिया जिसका उसे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, समझ आई बात? कि इफ आई कंपेयर द चैरिटी पेड बाय द कस्टमर्स फॉर डिलेड पेमेंट्स, ठीक है, एंड कंपेयर इट विद द सैलरी ऑफ द मैनेजर, शायद इनमें कोई लेना देना ना हो। जब इसकी कोरिलेशन निकालेंगे बहुत थोड़ी आएगी, बहुत थोड़ी, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव वाला मसला भी होगा, वी डोंट नो कि इसका कोई लेना देना है कि नहीं। बट इफ यू आर कंपेयरिंग with the income of the customer and the buy force charity that he has to pay, it might be negative. जितना अमीर कस्टमर होगा मोस्ट प्रोबेबली वो पैसे टाइम पे वापस दे देगा, तो उसको चैरिटी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, या हम उससे इस तरह रिलेट करते हैं कि दी बिलीफ ऑन इस्लामिसिटी ऑफ अ कस्टमर एंड हिज टाइमली पेमेंट। ठीक है, तो वहां स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगी। तो दिस इज वन एग्जांपल, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसने यही काम कंप्यूटर से भी किया, उसमें भी यही आंसर है, व्हेन वी गो टुवर्ड्स कंप्यूटर एंड वी विल कैलकुलेट इट। ठीक है, अब फॉर दिस चैप्टर हम करने लगे हैं टेस्ट, इज इट सिग्निफिकेंट और नॉट। सो सिंस दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, आई विल टेक सम टाइम ऑन इट एंड देन विल डिस्कस ऑन इट। सो since we are able to measure a relationship between two variables using a number, हमने अभी एक ऐसा मेथड पढ़ा जो दो वेरिएबल्स के दरमियान में किसी एक नंबर से रिलेशनशिप को मेजर कर पा रहा है कि वो पॉजिटिव है या नहीं और स्ट्रॉन्ग है या नहीं। यानी हमने एक ऐसा मेथड सीख लिया जो एक नई चीज मेजर कर रहा है कि दो वेरिएबल आपस में रिलेट कितना करते हैं या कैसा करते हैं। यानी इट्स अ ब्रेक थ्रू दैट हम उस रिश्ते को दो वेरिएबल्स के दरमियान को किसी एक नंबर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसा है और कितना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है और स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वो एक बार नंबर आ गया। अब जब हमारे पास नंबर आ गया, द सेकंड इशू इज कि क्या वो नंबर इतना बड़ा पॉजिटिव में या इतना छोटा नेगेटिव में है कि वो सिफर से फर्क है। क्या हम उसको कह सकेंगे कि ये सिफर के बराबर नहीं है? ये मैटर करता है। सिफर का मतलब क्या होगा कि वो जो रिलेशनशिप हमें नजर आया ग्राफ में वो सिर्फ महज इत्तेफाक था, उसमें कोई रिलेशनशिप वाली बात नहीं थी। ठीक है, कि जितनी दफा मतलब फॉर एग्जांपल किताबों में लिखा जाता है कि भाई पाकिस्तान में किसी ने छींका और अमेरिका में बारिश होगी, क्या पता कोरिलेशन निकालें और बढ़ी आ जाए कि यहाँ पे छींकने वाले लोग ज्यादा हैं और बारिशें भी ज्यादा होती हैं। बट ये टेस्ट बताएगा कि क्या वो जो दोनों चीजें हैं वो सच में एक दूसरे को कर रही हैं इफेक्ट, या वो महज इत्तेफाक है। ठीक है, अगर वो नंबर बड़ा आ सकता है क्योंकि दुनिया की आबादी ज्यादा है, और अगर मैं कोई ऐसा मुल्क ले लूं जहां बारिशें भी ज्यादा होती हैं तो कोरिलेशन आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? तो या इस तरह सोच ले, और भी मिसालें दी जाती। तो इसकी एक वेबसाइट है, मैं दिखाऊं, जिसमें उसने पूरी दुनिया से ऐसे कई मिसालें निकाल के दिखाई हैं जिसका आप उसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनकी कोरिलेशन बड़ी स्ट्रांग आ रही। ठीक है, अभी देखता हूं। So we have discussed earlier that correlation will tell you the coincidence that two variables might be increasing together or reverse, that one is increasing and the other is decreasing. But is it realistic or is it believable? We need to test. We have just measured a number that is measuring a relationship, but is the relationship evidence that we got is
different from 0 or not, we have to test it. For that, we have to create hypothesis. First one is H0, null hypothesis, that correlation is 0. कि जो नंबर हमारे पास आया, it is as good as 0, ना होने के बराबर, means no correlation. It was just a coincidence. There was no correlation. Second, HA, alternative hypothesis, that correlation was not equal to 0. किसके इक्वल है? जो हमने नंबर मालूम कर लिया, 0.88 आई थिंक 0.886. तो क्योंकि वो 0.886 0 से डिफरेंट है, सो वी जस्ट से दैट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज कोरिलेशन डिफरेंट फ्रॉम 0, नॉट इक्वल टू 1. सो कोरिलेशन एग्जिस्ट, उनमें कोई ना कोई एसोसिएशन है, सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं. सो द फॉर्मूला फॉर द टेस्ट इज T is equal to R divided by 1 minus R square divided by N minus 2 whole under root. Computer will calculate it. So there is no need to remember. Just you need to know is what is R. R is the value of correlation. We already calculated 0.88. What is R square? It's a square value of correlation. What is N? N is the sample size. It was 8. Okay. So when you put the values, the answer is 4.68. So हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया, कोरिलेशन आई 0.886. उस पे टेस्ट कैलकुलेट किया टू चेक कि क्या वो कोरिलेशन सिफर के मुतरादिफ है कि नहीं. नल हाइपोथेसिस का मतलब है सिफर के बराबर है, अल्टरनेटिव का मतलब है सिफर के बराबर नहीं है. अब हमारे पास इतने गवाह या एविडेंस मौजूद नहीं है कि हम मालूम कर सकें कि वो सिफर के बराबर है या नहीं. हमारे पास एक नंबर आया था, तो हमने एक नया टेस्ट क्रिएट किया that will give us an evidence that the correlation is realistic or not equal to 0. तो टेस्ट की वैल्यू आई 4.68. अब हम कैसे जज करेंगे क्या बता रहा है? फॉर दैट ही shown in the next slide. Let me see. Yes. So in the next slide, what he said that the test value that we made is 4.68. According to statistics, if the test value is bigger than 2.44 or less than minus 0.244, it is not equal to 0. यानी अगर हम टेस्ट करेंगे जिसका आंसर 4.68 आया, उस टेस्ट के लिए हमारे पास बेंचमार्क वैल्यूज गिवन है स्टैट्स की बुक्स में, उसने यहाँ पे लिख दी 2.44 और माइनस 2.44. अगर ये टेस्ट 2.44 से बड़ा आएगा तो इसका मतलब इसकी कोरिलेशन सिफर से बड़ी है, सिफर के बराबर नहीं है. अगर माइनस 2.44 से छोटा आया टेस्ट का नंबर तो हम कहेंगे ये कोरिलेशन नेगेटिव है और 0 नहीं है. यानी स्टैट्स ने हमें एक ऐसा टूल सिखाया जो हमें एक एविडेंस दे रहा है कि जो हम चीज मेजर कर रहे हैं, दो वेरिएबल को मुवाजना कर रहे हैं कि क्या इनमें कोई आपस में लिंक है. तो हमने लिंक तो मेजर किया, उसकी वैल्यू है 0.866. तो क्या वो लिंक जो भी नंबर है वो इतना बड़ा है कि हम कह सकेंगे जो बात सिफर में है वो इसमें नहीं है. यानी अगर हम इसको सिफर रिज्यूम करेंगे तो हम गलत कर रहे होंगे. समझ आ गई बात? तो ये टेस्ट एक पहला टेस्ट है जो ऐसे टेस्ट हम रेगुलरली बनाएंगे आगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस कंप्यूटर विल डू इट. वी डोंट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. सो what we did in correlation today, that if we measure the correlation, which is the numeric value of our relationship, we need to compare it with using a test to make sure that the correlation is not 0, so that we can use that information to make a decision. That's why we take this test. So here the test value is telling us that it is bigger than the benchmark value. We call it critical value. So it is significant. The word significant is stated used here. Significant का पूरा मतलब क्या है? It is significantly different from 0. So significant word का पूरा मीनिंग ये है. तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसका मकसद ये था कि जो कोरिलेशन की वैल्यू निकालेंगे वो एक रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेटिव नंबर होगा.
कि हिस्टोरिकली जब हमने डेटा लिया दो वेरिएबल्स आपस में इस तरह रिलेट करते थे। अब जब हम ग्राफ देख रहे हैं तो कहीं कोरिलेशन ज्यादा भी आ रही थी, कहीं कम भी आ रही थी। यानी अगर मैं ग्राफ में जाऊं और ये एक एग्जांपल इसी को यहां से कंपेयर कर दूं कि अगर मैं इस डॉट को इस डॉट से कंपेयर करूं तो कोरिलेशन ज्यादा नजर आ रही है, ऊपर को जा रही है, बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो वो तो नेगेटिव कोरिलेशन भी नजर आ रही है, इसको इससे करूं तो वो नॉर्मल नजर आ रही है। सो व्हाट इज द करेक्ट सिचुएशन? रियल लाइफ में एक कांस्टेंट नंबर नहीं आया, एक ऐसा नंबर आया जो बहुत सारे नंबरों का रिप्रेजेंटेटिव है। समझ आई बात? कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा बताता हूँ कि if I compare these two dots, it is saying positive correlation. If I compare these two dots, it is saying negative correlation. तो हिस्टोरिकली हर दो डॉट्स पे कोरिलेशन कैलकुलेट हो सकती है, हर जोड़ी पे, हर दो इवेंट पे, और हर दो इवेंट में दो एक्स की वैल्यूज होंगी, दो वाई की वैल्यूज होंगी। हर जोड़ी पे एक कोरिलेशन कैलकुलेट हो सकती है। अगर आपके पास 100 इवेंट्स हैं तो 99 कोरिलेशन निकल सकती हैं, यानी एक नया डाटा बन गया। हमने रिलेशनशिप मेजर करना था, हम एक नया डाटा बना बैठे, यानी मसला हल करने के बजाय एक नया और मसला खड़ा कर लिया। तो उसका सोल्यूशन स्टैट्स ने में क्या दिया कि अगर हमारे पास डेटा आ जाए और हमने उसे डिसीजन लेना है तो पहला काम क्या करेंगे, डेटा का मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नंबर ढूंढेंगे। अगर वो एक वेरिएबल डेटा है हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। इधर भी यही हुआ, सॉफ्टवेयर ने क्या किया कि हर जोड़ी पे कोरिलेशन कैलकुलेट की होगी बैकएंड पे, वो 99 जो कोरिलेशन आई उसके एवरेज कैलकुलेट करके आपको बता दी, वो आई 0.886, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ their data. And what is the data? Data is the relationship between x and y. So correlation हमें क्या दे रहा है, most representative value of the relationship between x and y. बात समझ आ गई? So हमारे पास एक डेटा का most representative नंबर मिल गया जो हमें बता रहा है कि जो डेटा आप स्टडी कर रहे हो उनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है, और वो क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने डिसीजन मेकिंग में उस पर डिबेट करनी है कि हम पॉलिसी मेकर हम मालूम करना चाह रहे हैं कि भी सेलम फाइनेंसिंग बढ़ाने से बैंक का रिस्क ज्यादा होगा या कम होगा। उन्होंने अपनी 50 पुरानी इन्वेस्टमेंट्स का डाटा निकाला तो पता चला कि उनमें से 10 में सेलम बढ़ाने से रिस्क बढ़ गया था क्योंकि वो नॉन परफॉर्मिंग लोन हो गए थे उनमें से ज्यादा, और बाकी 15 कैसी थी जहां पे फाइनेंसिंग की और रिटर्न भी जल्दी आ गया तो रिस्क कम हो गया। उनमें कुछ ऐसी थी जहां जब इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गया, मार्केट प्राइस ऊपर चली गई। कई ऐसे थी जहां रिस्क तो नहीं आया था, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग रिस्क तो नहीं आया था लेकिन मार्केट रिस्क आ गया कि जितना प्राइस बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी। तो हर किस्म का इवेंट हुआ कि वो पॉजिटिव भी था और पॉजिटिव स्ट्रांग भी था, या पॉजिटिव वीक भी था, नेगेटिव भी था तो नेगेटिव स्ट्रांग भी था, नेगेटिव वीक भी था। तो हमने चेक करना है कि ऑन एवरेज कैसा था। तो हमने क्या किया कि सलम फाइनेंसिंग जो डिस्पर्समेंट हुई उसको उसके एसोसिएटेड रिटर्न से रिलेट किया यूजिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन हमने बताया कि जनरली या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या मतलब है कि जब भी फाइनेंसिंग हुई सलम में प्रॉफिट्स बढ़ गए। नेगेटिव होगा तो क्या मतलब होगा, जब भी फाइनेंसिंग हुई सलम में प्रॉफिट्स कम हो गए। ठीक है, अब ये तो प्लस माइनस वाले साइन से पता चल गया। तो अगर वो प्लस साइन है और आंसर 1 के पास है तो ज्यादा भरोसे के काबिल है कि जब भी फाइनेंसिंग हुई ज्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अगर वो बिखरा होगा तो उतना ही रिस्की है कि फाइनेंसिंग से प्रॉफिट तो बढ़ता है लेकिन उसका डिस्पर्शन भी ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। समझ आ गई बात? सो कोरिलेशन का जो नंबर आया में वो 0.7 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.9 हो सकता है। तो जितना बड़ा नंबर पॉजिटिव नेगेटिव साइन से डायरेक्शन पता चल गई, जितना बड़ा नंबर उतना हमें पता चलेगा कि जब जब वो बड़ा फाइनेंसिंग बढ़ी क्या हर दफा प्रॉफिट बढ़ा। अगर वो 1 के पास है तो इसका मतलब ज्यादा दफा प्रॉफिट बढ़ा। अगर 1 आ गया तो हर दफा बढ़ा, और अगर नेगेटिव 1 आया हर दफा कम हो गया।
तो अगर दरमियान में है तो हमें और तहकीक की जरूरत है। और तहकीक क्या है कि लेट्स सपोज नंबर आ गया 0.3 पॉजिटिव 0.3 के हर 100 पे 30 दफा प्रॉफिट बढ़ गया, बाकी दफा कभी कम हुआ कभी नहीं हुआ। कोरिलेशन का यही मतलब है कि हर 100 इन्वेस्टमेंट्स पे 30 दफा गारंटी है प्रॉफिट बढ़ गया, कितना बड़ा ये नहीं पता, और बाकी 70 में या प्रॉफिट कम हुआ या नहीं हुआ। तो क्या हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो हमें सलम करने की इजाजत देगा कि नहीं? तो उन्होंने अपना कोई थ्रेशोल्ड रखा होगा कि चले लॉस तो हर चीज में होता है, इस्लामिक फाइनेंस में रिस्क शेयर हो रहा है, लॉस तो होना होना है, तो कितना लॉस हम बर्दाश्त करें। तो इसका मतलब है कि वो कैलकुलेट करेगा। अब अगर 0.3 कोरिलेशन आती है तो इसका मतलब है 30% इवेंट्स ऐसे हैं जहां फायदा हुआ। तो क्या 30% जो नंबर है वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है? अगर आपका बैंक ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट्स कमा रहा है तो कहेगा 30% से क्या होगा, इतना तुम्हारा खर्चा होना है। वो कहेगा नहीं छोड़ो। क्या पता ऐसा बैंक हो जो पहली दफा खुला हो तो कहे हमारे लिए 30 भी बड़ा है, अगर हम 30% भी रिटर्न कमा लें तो हम उससे ऐसा इंप्रूव कर लें। ठीक है, तो उसके लिए हमने टेस्ट बिल्ड किया। टेस्ट में क्या चेक किया, लेट्स गो बैक टू द फॉर्मूला, कि क्या ये कोरिलेशन जो 0.3 आई या यहाँ पे 0.88 आई, क्या इतनी बड़ी है कि ना करने में भी उतना ही फायदा है जितना करने में है। ये कोरिलेशन आई जो सलम में 0.3, क्या वो इतनी बड़ी है कि अगर हम सलम में इन्वेस्टमेंट ना करें तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, या वो इतनी छोटी है कि सलम में इन्वेस्टमेंट करो या ना करो प्रॉफिट चेंज नहीं होने लगा, क्योंकि जितना उसने रिटर्न लेके आना उतना रिस्क भी लेके आना है। तो ये टेस्ट ने मैं बताया इस वाली एग्जांपल में 4.68 आया। इसका मतलब है इस केस में जो कोरिलेशन है वो बड़ी है, और अगर वो सलम वाली भी सिग्निफिकेंट होगी तो उसका मतलब होगा सलम में इन्वेस्टमेंट जब भी हुई प्रॉफिट्स बढ़ गए। बेशक वो 100 में से 30 दफा बढ़े, लेकिन जो बढ़े इतने ज्यादा बढ़े कि जो कम होने वाले नंबर को कैंसिल आउट करके नेट में बढ़ गए। ठीक है, so this was a topic for correlation. I hope you understood about this topic.